In progress, please go ahead, Atul bhai. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે મદ્રાસ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટ સનાતન ધર્મના વક્તા સંધ્યારાણી, રાજેશ્વરીબેન દવે, આભા જયમન તેમજ આજની સભામાં હાજર ક્રોટોના થિયોસોફિકલ સોસાયટીના મહેમાન વક્તા પાબ્લો સેન્ટર અને મિશન સેન્ટર તેમજ સભાના મોડરેટર શ્રી ધરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in vibrant every in atom. every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden Oh, light, shining in light, every creature. every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden hidden love, we have embracing all all in in oneness. oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know Also he is also one with one every with every other. other. Shanti, Shanti, Shanti. Okay, thank you, Atul bhai. And before we go ahead, uh, in today's special session, we have invited two of our guests, Pablo Sender and Michelle Sender. So they are here in Mumbai, and currently Pablo is in our studio, which is going to be the new studio. And you can see that we both have separate backgrounds. So this new studio is capable of, let's say, 5 computers or even machines are there. We can put up different backgrounds, not only as a still, but also as a video. So if I am a newsreader and he's a newsreader, in the background, all the scenes and all the data sent by uh, our different lodges, federation, all over world can be shown here. So really, if we start that within a month, it will start. So it will be a very great thing to combine together. First, it will start every week, then we'll convert it into a daily news item. So currently, Archana ji, where are you? Yeah, I would request you to give introduction of both our invitees, special guests. Please go ahead. Archana ji, over to you. Please introduce Pablo ji and Michelle. Please don't mind the noise as we have a voting here and people are campaigning. I'll take a minute of off. Your voice is clear. Go ahead. Okay. Hello everyone. May I introduce Pablo Sender. He is a PhD and joined the Theosophical Society TS in his native Argentina in 1996, where he received his doctorate in biological sciences. He has lived and worked at the international headquarters of the TS in Adyar, India, and at the National Center of the TS in America. He is currently at the Crotona Institute of Theosophy in Ojai, California. As an international speaker, he has presented programs and retreats worldwide. A leading theosophical scholar, Pablo has been a student of the teaching of H.P. Blavatsky for over 25 years. His background encompasses both theosophy and science, enabling him to present spiritual teachings in a way that is profound, precise, and practical. May I also introduce Michelle Sender? She has been a member of the Theosophical Society since 2006. She lived and worked at the national headquarters of the TS in America and is currently part of the community at Crotona Institute of Theosophy. She has a degree in education
and has given lectures, classes, and seminars on theosophy and its practical application in daily life, both in the US and abroad. She is the founder of the Four Heart Productions, a publishing company created to share the living power of theosophy. Welcome, both of you. Thank you. Thank you, Archana so much. And Pablo, I will request you to say something about the books you have written and the books which are published. You can go ahead one by one. All right. So Michelle started a few years ago a publishing company to publish new books on theosophy. So we have already published a few. Let me first tell you about a book that is not yet out, but will be soon in a couple of months. And it is called The World of Theosophy. And this is a small book because it's a book that aims at explaining in a simple language what theosophy is and the Theosophical Society for inquirers who know nothing about theosophy. The typical person that comes to our lodges and say, oh, this seems interesting, what is this? So the book is written in question and answers with the typical questions that people ask when they come. And it talks about what the TS is, the objects, the motto of the Theosophical Society, what are theosophists, what we do. Then it goes into the theosophical practice. And there are 3 chapters with an overview of the most important teachings, all in question and answers in a dialogue form. So we hope that this is helpful for lodges to recommend new people to read that book. So then there is a book, is this the one? Yeah, the Blavatsky's teachings on theosophical practice. This is it's a pamphlet, and it is the Blavatsky lecture that I gave last year or so in England. In England, they have every year they have a Blavatsky lecture. This was established very early in the history of the Theosophical Society, and then that lecture is published. So in this pamphlet, I brought several quotes from HPB talking about the practice and organized them in a system which includes service and study and meditation and self-mastery and purification. So briefly, there is a presentation of a system of yoga that Theosophy proposes. Then we have a book, Evolution of the Higher Consciousness. This is actually the first book that we published. And it's again based on Blavatsky's teachings. In general, I'm trying to write about Blavatsky's teachings because, as you all know, she is not very easy to understand. So it's good to have some literature that can help us understand Blavatsky. And that's why I have focused in my writings on her. So what I did was to bring all the teachings that she wrote about the higher consciousness and explain it in a systematic way. So the higher principles, Atma, Buddhi, Manas, and what is the quality of each of them, what is happening in our evolutionary journey, and then how can we communicate with our higher nature. And then the second part is the practical aspect. So the first part is the theory, the metaphysics. The second part of the book is the practical aspect with exercises and meditations, etc. And finally, Approaching the Secret Doctrine. This is a book that
basically is written to help people study the secret doctrine. As we all know, it is a wonderful book, but it's not easy to study. So in what I try to do here is to teach people how to study the secret doctrine, because there is a special way to study this. Then there is a first part on how to study the secret doctrine. The second part is on the main teachings that we find. And the third part, again, is about practice, how to apply the principles of the secret doctrine in our daily life, in meditation, or in how we relate to others, how we live, based on the principles that we find in the secret doctrine. Thank you so much for giving a very short brief of this book. And very proudly, I say that, Michelle, you have done a wonderful beginning, and which will last for long, of starting a publishing house. So, would like to request you to say something about it and how the books will be available through Adyar or whatever. Thank you. You are muted. Okay, that'll work. All right, thank you very much for inviting us here tonight. Yeah, so I want to touch on just a couple things that I don't know if Pablo said, or reminders about the books that he listed. So The World of Theosophy is written in question and answer form. And he's taken the ideas, kind of like the key to Theosophy is. So he's taken those ideas and he's put it in this book. Then the Blavatsky lecture has, I looked on the back, it has been going on since 1918. And I didn't have enough time to calculate what number Blavatsky lecture this is, but it's up there. It's more than 100. And then for the evolution of the higher consciousness, I counted one time, and I believe it's about, what Pablo has done is found 235 of Blavatsky's quotes from all over her writings and brought them together and systematized them in the subjects that he mentioned. And then approaching the secret doctrine, I always give this such praise, because I was not a student of the secret doctrine. It was a little, it was too difficult for me to be able to differentiate between the Sanskrit, the science, the symbolism. But this book, Pablo's done it once again in a systemized way, that in a systematic way, that it makes the secret doctrine much more approachable. So those things. So yes, I started FOHA Productions in 2015. We came up with the tagline of sharing the living power of Theosophy, because that's really our goal in doing this. And we chose the name FOHAT because FOHAT is that dynamic energy that brings together the spirit and matter to make, or the material, the substance, to make things appear on the physical plane. So we take our ideas for books, we take the physical matter, that's needed for the books, and with that energy, we come together and we have something for you to hold in your hands. So that's the idea of FOHAT. So the books are available. It's a new thing getting our books out to India and to Europe. Buds. Is she asking me a question? No. Go ahead. Go ahead. Okay. Just checking. And so so the books are available now. I know the Mumbai Theosophical Society or the Blavatsky Lodge has a few books. The bookshop at Adyar now has some books for sale. And so that seems to be the easiest route to get to the books.
Was there anything else that you had asked, Tarel? No, thank you so much. And as I said, or I had talked with you, that these books will be available through Adyar. And also, if anyone wishes to have the book, they can call me or just write a message on our WhatsApp, which is 8450911118. And the books can be available to you through a good discount also. Thank you, Michelle, for joining. Be there. If anybody has a question, Pablo and Michelle, they will just after the this entire presentation, will ask you a question. You can all put it in the chat box also. So time is not wasted and we can go ahead easily. Okay. So now let's see if Sanatani is there. Is there a question there in chat box? No, I think that was just a welcome. No, no, no. There is no question. Okay. So Rajeshwari ji, due to something, she is held up in traffic. So I would request you to go ahead with the Gujarati version first, and she will join. Please go ahead. Unmute yourself, please. Haji, unmute yourself, Rajeshwari ji. હેલો Yeah, I can get you. પહેલા ગુજરાતી લેવાનું છે હા, પહેલા ગુજરાતી બોલ પેલી આગા નથી. She will come anytime. She is held up in traffic. Got a message from her. ઓકે ઓકે Please go ahead. ઓકે નમસ્કાર સૌને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામના હિન્દુ ધર્મ અને નીતિશાસ્ત્રની વ્યાપક પાઠ્ય પુસ્તક જે છે એમાં સેન્ટ્રલ હિન્દુ કોલેજના ટ્રસ્ટી મંડળે અમુક સિદ્ધાંતો ઘડ્યા. How much time? હેલો અવાજ આવે છે ને અવાજ આવે છે Loud and clear. आ रही है आपके पास. આ રહી છે ને હા તરલભાઈ હું તો 10 મિનિટ્સ જ લઉં ને તરલભાઈ Please go ahead. હા ઓકે no I will talk till 10 minutes no Madam Bhai. Say that again. hello I will tell you when the part 1 ends. Go ahead. અચ્છા ઓકે સેન્ટ્રલ હિન્દુ કોલેજના ટ્રસ્ટી મંડળે અમુક સિદ્ધાંતો ઘડ્યા જેના આધારે તેના નિયંત્રણ હેઠળની તમામ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક અને નૈતિક શિક્ષણ આપવાનું છે. સેન્ટ્રલ હિન્દુ કોલેજનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો એનો હેતુ શું હતો કે હિન્દુ ધાર્મિક અને નૈતિક તાલીમને સમયની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ પશ્ચિમી શિક્ષણ સાથે જોડવાનું સમયને અનુરૂપ અત્યારે જે હોય એ પ્રમાણે આ ધાર્મિક અને નૈતિક તાલીમ વ્યાપક ઉદાર અને બિન સાંપ્રદાયિક પાત્રની હોવી જોઈએ. કેટલું બધું અત્યારના સમયને અનુરૂપ છે. ચોક્કસપણે હિન્દુમાંથી અને માત્ર હિન્દુ હોવું જોઈએ અને એની વિચારના સૌથી વધુ સ્વરૂપોને એકીકૃત કરવા માટે પૂરતું અંદર હોવું જોઈએ. રૂઢિવાદી તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત શાળાઓ વચ્ચેના વિવાદનો વિષય હોય તેવા તમામ સિદ્ધાંતો જેમાં વિવાદ ન હોય કે જેમાં એવા જ સિદ્ધાંતો રાખવા જોઈએ જેવા વિવાદ હોય તેવા સિદ્ધાંતોને ટાળવા જોઈએ. વિદ્યાર્થી તેમના પુખ્ત જીવનમાં તેના બૌદ્ધિક અને ભાવનાત્મક સ્વભાવને અનુરૂપ વધુ વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતો બનાવી શકે છે. વિદ્યાર્થી ધર્મનિષ્ઠ બની શકે છે, કર્તવ્યનિષ્ઠ બની શકે છે, મજબૂત, આત્મનિર્ભર, પ્રામાણિક, ધાર્મિક, સૌમ્ય અને સારી રીતે સંતુલિત પાત્રની રચના તરફ વિદ્યાર્થી જઈ શકે એ પ્રકારનું આ સિલેબસ એ લોકોએ બનાવવાનું નક્કી કર્યું.
જેને લીધે વિદ્યાર્થી એક સારો માણસ બની શકે અને સારો નાગરિક બની શકે. જીવનના સામાન્ય દ્રષ્ટિકોણ અને જીવનની ફરજોને સંચાલિત કરી શકે. આવી રચના માટે થઈને, એટલે કે આવા વિદ્યાર્થીને બનાવવા માટે થઈને એકલા જે હિન્દુઓ એક સમાન વિશ્વાસમાં જોડે છે તે સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે તેને શીખવવું જોઈએ. તેની અવગણના, જેને વિભાજિત કરે કે જેને ડિસ્ટર્બ કરે તેને એમાંથી બાકાત રાખવા જોઈએ. સહનશીલતાની વ્યાપક ભાવના વિકસાવવા માટે કાળજી લેવી જોઈએ, જે માત્ર હિન્દુઓ વચ્ચેના વિચારો અને વર્તમાનના તફાવતોને જ નહીં પણ બિન હિન્દુઓ વચ્ચેના ધર્મના તફાવતોને પણ આદર આપે છે. તેથી ધાર્મિક એ લોકો કહે છે, નંબર 1, ધાર્મિક અને નૈતિક ઉપદેશો એવા હોવા જોઈએ કે તમામ હિન્દુઓ તેનો સ્વીકાર કરી શકે. નંબર 2, તેમાં વિશેષ ઉપદેશોનો સામેલ કરવા જોઈએ જે હિન્દુ ધર્મને અન્ય ધર્મોથી અલગ પાડે છે. નંબર 3, તેમાં કોઈ ચોક્કસ શાળા અથવા સંપ્રદાયના વિશિષ્ટ મંતવ્યો ન હોવા જોઈએ. જે સંપ્રદાયની સ્કૂલ હોય તો એના વિશિષ્ટ મંતવ્યો એમાં ન હોવા જોઈએ. આ પ્રારંભિક પાઠ્યપુસ્તક. યસ Rajeshwari, first 2 pages are part 1. 3 and 4 Okay. pages are part 2. Okay. Please carry on. તેમાં કોઈ ચોક્કસ શાળા અથવા સંપ્રદાયના વિશિષ્ટ તત્વ ન હોવા જોઈએ અને એ લોકો એમાં એમ કહે છે કે ભારતની ઉચ્ચ શાળાઓના મધ્યમ અને ઉચ્ચ વર્ગ હિન્દુ છોકરાઓના ઉપયોગ માટે છે અને તેમને તેમના રાષ્ટ્રીય ધર્મ વિશે સામાન્ય પરંતુ સાચો ખ્યાલ આપવા માટે રચાયેલ છે, જે કોલેજમાં અને પછીના જીવનમાં સંપૂર્ણ અભ્યાસ દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે, પરંતુ કોઈ પણ આવશ્યક સંજોગોમાં તેને બદલવા જોઈએ નહીં. એને રિફોર્મ કરવા જોઈએ પણ એને બદલવા જોઈએ નહીં. એમના મૂળભૂત વિચારો અને સિદ્ધાંતો એ છે કે જેને સામાન્ય રીતે રૂઢિચુસ્ત માનવામાં આવે છે, પરંતુ કયા સાંપ્રદાયિક વિભાગો ઊભા થાય તેની વિગત નથી. આજે મારી પાસે કન્ટેન્ટ છે એમાં તેની વિગત નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે સાંપ્રદાયિક માતા પિતા અથવા શિક્ષક તેમાં કંઈક ઉમેરશે પરંતુ તેમાંથી કંઈ પણ શોધી શકશે નહીં અથવા તો કાઢી શકશે નહીં. ઉમેરી શકે, એડ કરી શકે, પરંતુ એમાં તે કંઈ પણ કાઢી શકશે નહીં. જેઓ તેઓ નકારવા માંગતા હોય ત્યારે પુસ્તક તેમને પોતાના અભ્યાસ માટે છોકરાઓના હાથમાં મૂકી શકાય છે. મૌખિક સ્પષ્ટીકરણ દ્વારા સરળ બનાવવાનો હેતુ છે, પણ આ દરેક પ્રકરણ એક રૂપરેખા તરીકે સેવા આપે છે. એક કરતા વધુ પાઠ આધારિત એના પર હોઈ શકે છે. સ્વાધ્યાયને અંતે એટલે કે પાઠના અંતે આપેલા શ્લોકો વિદ્યાર્થીઓએ યાદ રાખવા જોઈએ. એને યાદ રાખીએ એના માટે એને પ્રેરિત કરવા જોઈએ. તેમના પર ધર્મ પર પવિત્ર સત્તાધિકારોનો ઉપયોગી ભંડાર મેળવશે. આનું નામ સનાતન ધર્મ. સંપૂર્ણ ચર્ચા પછી પસંદ કરવામાં આવે છે. આ નામ સનાતન ધર્મ પૂરેપૂરી બધા વિદ્વાનોએ ચર્ચા કરી છે અને પછી એનું નામ એક નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તક હિન્દુ યુવાનોના મનમાં યોગ્ય વિચારસરણીનો મજબૂત પાયો નાખવામાં ઉપયોગી સાબિત થાય અને તેઓને તેમની માતૃભૂમિ અને સમાજના નૈતિક, વફાદાર અને ઉપયોગી નાગરિક બનવામાં મદદરૂપ થાય એવી આ પુસ્તકની પ્રાર્થના છે. એની પુસ્તકની એ પ્રાર્થના છે કે કેવી રીતે એ લોકો ઊંચા નાગરિક બનશે અને કેવી રીતે એ બધું સમાજને ઉપયોગી કરશે અને પછી જ એ લોકોને વિશ્વમાં મોકલવામાં આવશે. મૂળભૂત હિન્દુ ધાર્મિક વિચારો જેમ કે એક અસ્તિત્વ અને પુનર્જન્મ, કર્મ, બલિદાન અને દ્રશ્યમાન અને અદ્રશ્ય એવા વિશ્વમાં આપણને સાચા હિન્દુ ધાર્મિક એટલે કે રિવાજો અને ધાર્મિક વિધિઓ સાથે કામ કરી રહ્યા છે. એમાં પહેલું છે સંસ્કાર, બીજું છે શ્રાદ્ધ, ત્રીજું શૌચાલયને આપણે એમ કહીએ કે સ્વચ્છતા અને પાંચમું છે દૈનિક બંધ. સર અહીંયા પ્રકરણ 2 ચાલુ થાય છે તો હવે શું કરવાનું? Yes, now you can stop. We'll go for Hindi.
Abaji, please go ahead with the Hindi आगे version. Part 1 ends on page 2. Thank you. ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। आप सभी स्वाध्याय प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत आत्मवंदन। अ वेरी डिवाइन इवनिंग टू ऑल द मास्टर्स, दोज हु आर प्रेजेंट हियर। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम कि आप यहाँ एकत्रित हुए स्वाध्याय के लिए। फ्रेंड्स, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हमारे स्वाध्याय का विषय है, वो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म और नैतिकता का एक प्राथमिक पाठ्य पुस्तक, जो एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई थी 1916 में। उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें। तो सबसे पहले तो ये कि सनातन का मतलब क्या है, ये हम जाने पहले। फ्रेंड्स, सनातन का मतलब होता है शाश्वत, यानी प्राचीन। और धर्म का अर्थ है जो हमारी संस्कृति की जो पांचवी जड़ जो उपजाती है। इस बारे में एनी बेसेंट जी का ये कहना था कि ये जो किताब लिखी गई है, ये पुस्तक उच्च विद्यालय के मध्य और उच्च वर्ग के हिंदू छात्रों के लिए बनाई गई है। तो यहाँ इसे केवल सनातन धर्म के अर्थ में हम ले रहे हैं, जो हमारा आज का स्वाध्याय है। भारतीय जो लोग हैं, हिंदियों के बीच विचार और आचार की विविधता का सम्मान करते हैं, यानी जो विविधता है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन यह गैर हिंदुओं के धर्मों के मतभेदों का भी सम्मान करता है। यानी हिंदू धर्म के इतर जो और धर्म है, उनका भी ये सम्मान करता है। यानी विविधता में एकता, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। ये सभी धर्मों को श्रद्धा के साथ मानता है, और ये मानते हुए कि वो सभी और भी जो धर्म है वो भी सब एक तरफ ही जा रहे हैं, वो है परम सत्ता की ओर। भले ही उसको हमने डिफरेंट नाम दे दिए हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई, लेकिन वो सब एक ही परम सत्ता की ओर ले जाते हैं। तो आज का विषय है, आज हम सामान्य हिंदू धार्मिक रिवाजों और संस्कारों के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अब ये बात करें कि संस्कार क्या है, किसे कहते हैं संस्कार। तो संस्कार जो है, इसमें जो प्रत्येक धर्म जो है वो अपने अनुयायियों के लिए कई अनुष्ठान या संस्कार निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ये इनका उद्देश्य क्या है संस्कारों का? पहला है जीव को, यानी जो भी जीव आता है उसको उसके आवरणों को जीतने, जितने उसके बॉडीज हैं, जितने उसके लेयर्स हैं, उनको जीतने के लिए और उनको शुद्ध करने में मदद करना। या आवरण का मतलब है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे 7 लेयर्स कहे गए हैं, उनको किस तरीके से हम छेदन करें उनका, और उनकी शुद्धि में मदद करना। दूसरा, देवताओं और ऋषियों जैसी उच्चतर बुद्धियों को उनकी सहायता के लिए लाना, ये संस्कार का उद्देश्य है। और थर्ड है इसका ऑब्जेक्टिव, उसके चारों ओर के वातावरण को सुधारना, यानी जो जीव आता है उसके चारों ओर के वातावरण को सुधारना, जिससे कि उसका मन स्थिर हो जाए और वो केंद्रीकरण करे, यानी वो फोकस्ड हो जाए अपने गोल के लिए, ये मतलब है। तो अब हम बात करेंगे, यानी हमने बताया कि सामान्य धार्मिक हिंदू रीति रिवाज में संस्कार, श्राद्ध, शौच और 5 दैनिक यज्ञ आते हैं। अब थोड़ा सा श्राद्ध के बारे में बात कर लिया जाए। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध उस अनुष्ठान का नाम है फ्रेंड्स, जो मृत्यु के बाद जीव की सहायता के लिए किए जाते हैं। यानी श्राद्ध का अर्थ है पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाने वाला जो अनुष्ठान है, वो श्राद्ध कहते हैं। यदि जीव ने ज्यादातर धर्म किया, यानी अच्छे काम किए हैं, और कम अधर्म किया है, तो ऐसा माना जाता है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, तो वो स्वर्ग जाता है, और वहां वो उसी तत्वों के बने, यानी एस्ट्रल बॉडी में वो उसी आनंद का अनुभव करता है जीव। वृद्धावस्था में मृत्यु अच्छी है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब आयु पूरी भोग ली जाए उसके बाद मृत्यु हो तो वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। हमारे यहाँ एक चीज और मानी जाती है सनातन धर्म में, कि दाह संस्कार पूरा होने के बाद जो जीव है वो प्रेत योनि में जाता है। जो जिसकी एस्ट्रल बॉडी होती है, जो वो प्रेत योनि, जो ईथरिक जिसको कहते हैं, जीव 1 वर्ष तक प्रेतलोक में रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ बरसी का विधान है, हम लोग वार्षिक श्राद्ध करते हैं। वो इसीलिए करते हैं जिससे कि वो 1 वर्ष तक वो प्रेतलोक में रहे, और 16 श्राद्धों के अर्पण से उसको अपने पितरों के साथ आनंद किसके साथ रहने में मदद मिलती है। इसीलिए हम लोग श्राद्ध करते हैं हमारे यहाँ। इसीलिए वो श्राद्ध का 15 दिनों का जो पक्ष है वो इसीलिए रखा जाता है। इसीलिए जो पुत्र है उसको हमेशा पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं।
और इन जो 16 दिन होते हैं हमारे, ये जो श्राद्ध के बहुत पवित्र माने जाते हैं, इन दिनों को पितृपक्ष भी कहते हैं, कुछ लोग कंगत कहते हैं, कुछ कनागत कहते हैं, कुछ लोग जितिया कहते हैं, कुछ महालय पक्ष भी कहते हैं, अनेक नामों से जानते हैं। और ये कब से शुरू होते हैं? पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या के दिन तक रहते हैं। पितृपक्ष में ये माना जाता है, ऐसा माना जाता है सनातन संस्कृति में, कि जो हमारे पूर्वज हैं वो पृथ्वी पर अपने वंशजों के घरों में आते हैं और रहते हैं। इन दिनों के दौरान लोग अपने पितरों को प्रार्थना करते हैं और उनकी पूजा करके उनको सम्मानित करते हैं। तो संक्षेप में श्राद्ध का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करना होता है और उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करना होता है। दूसरा हमारा आता है, तीसरा हमारा शौच आता है। शौच का मतलब होता है शारीरिक शुद्धता बनाए रखने, यानी किसी भी तरीके की शुद्धता, वो मानसिक भी होती है शौच। उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं हमारे, उनका पालन करने के लिए, जिससे कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहे। तो जो जीव है, हमारे यहाँ ऐसी कल्पना मानी जाती है सनातन संदर्भ में कि जो एक जीव है, बेसिकली वो जीव एक आत्मा ही है। जो उस जीव, जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है, तो बेसिकली वो परमात्मा ही है। लेकिन वो चूंकि प्रकृति में आ जाता है जब संसार में, तो उसके प्राकृतिक नियमों का पालन करना भी उसके लिए जरूरी है। उसके लिए शरीर को सुरक्षित रखना भी जरूरी हो जाता है। तो जो दृश्य जो हमें दिखाई देता है, हमारा दृश्य शरीर जिसको हम कहते हैं फिजिकल बॉडी, वो अपना जो अदृश्य युग में होता है, यानी हमारी प्राणमय कोश के साथ साथ और भौतिक पदार्थों से बना है। हमारे जो एटम्स होते हैं जो हमारे जिससे बनते हैं, वो भौतिक पदार्थों से बना है। जो ऊपर की हमारी लेयर है वो भौतिक पदार्थों से बनी हुई है। इसीलिए इसकी शुद्धि बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए इसको शुद्ध करना और शुद्ध बनाए बनाए रखने के लिए इसको हमें भौतिक संसाधनों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से हम उसको आगे के लिए सुरक्षित रखें, ये भी बहुत जरूरी है। और इसे करने के लिए हम इसको समझने की जरूरत है। तो इसके लिए जो हमारा दृश्य शरीर जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, जो अन्नमय कोश हमारा कहा जाता है बेसिकली, तो अन्नमय कोश उन कणों से बना है जो हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, या हमारे जो चारों ओर जो लगातार सूक्ष्म कण जो बरस रहे हैं वो भी इसमें हेल्प करते हैं। लेकिन ये सच बात है, थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। इसीलिए हमारे जो शरीर हैं वो डेड बॉडी से नहीं बने हैं, मृत पदार्थों से नहीं बने हैं, क्योंकि मृत पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं होती है। छोटी छोटी चीजों से बना है जिसको हम परमाणु कहते हैं। और ये छोटे जीवित चीजों से जो परमाणुओं के एक तरीके से संग्रह भी होते हैं। तो जिसको हम धूल का एक कण कहते हैं, वो भी जीवित प्राणियों का ही एक संग्रह है। उसको हम डेड मान लेते हैं धूल को, लेकिन बेसिकली वो डेड नहीं है, वो जीवित प्राणी है। और ये जो सूक्ष्म जीवों के कई लेयर्स हैं, और जब तक हम माइक्रोब्स तक नहीं पहुंचते, वो माइक्रोब्स होते हैं धूल में जिनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। तो पत्थर, पौधे, जानवर और मनुष्य और हमारे चारों ओर जो सभी जो चीजें हैं, जैसे हमारे घर हो गया, फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, इनमें भी छोटे छोटे परमाणु हैं बेसिकली, वो छोड़ते हैं। तो यदि हमें स्वस्थ रहना है तो केवल हमें उन प्योर एटम उनको लेना पड़ेगा, हमने उन परमाणुओं को भी शुद्ध रखना पड़ेगा और अशुद्ध कणों से हमें दूर रहना पड़ेगा। दूसरा, जो हम भोजन खाते हैं वो भी शुद्ध हो, ताजे फल, अनाज, जड़ें, जो हमारे जिनको हम प्राण में कहते हैं, जिसको आजकल प्लांट डाइट कहा जाता है ना। हम कहते हैं कि हम वेजिटेरियन है, आजकल उसको प्लांट डाइट बेस्ड कहते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट। तो इसमें जो है हमें जो हमें प्लांट से मिलता है भोजन, वो हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्राणिक जो ऊर्जा है उससे वो बढ़ती है, ये ऐसा माना जाता है। और ये बाकी चीजें जो हो जाती हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं। तो चीजों को जितना ताजा रहते हुए वो अपने ताजेपन में हो, उनको हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम उनको देर में खाएंगे, बासी होने पे वो डेड हो जाते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि जो मांस जो हम खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो डेड ही खाते हैं। क्योंकि जानवरों को कुछ जीवित तो खाते नहीं, जानवरों को मार के ही खाया जाता है, तो वो बेसिकली डेड हो गए, तो वो अशुद्ध माना जाता है। और इससे बना जो शरीर है, वो जो पौधों के उत्पाद से बना शरीर है, यानी जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, वो कहीं ज्यादा अधिक अच्छे होते हैं और वो बीमारियों से बचे रहते हैं, उनको रोग नहीं होते, उनके घाव भी जल्दी ठीक हो जाते हैं बनिस्बत उनके जो मांसाहारी हैं। इसी तरीके से जब हम लिक्विड डाइट लेते हैं तो पानी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो शुद्ध पानी हो, या फिर हम जड़ी बूटियों के साथ, जिसको हम आजकल ग्रीन टी कहते हैं, वो भी लिए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड रूप में हम लें तो अच्छा है, जैसे कॉफी और चाय भी।
वो ज्यादा उसका प्रयोग करेंगे तो फिर वो हानिकारक हो जाते हैं हमारे लिए। जैसे दूध को हम भोजन भी मानते हैं और पेय भी मानते हैं, दोनों चीज हैं। इसी प्रकार अब हम जो हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे शराब है, वो भी एक तरह का ड्रिंक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे शरीर के लिए बड़ी हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें विघटन शुरू हो जाता है। हम उसको सड़ा के बनाते हैं, बेसिकली अंगूर वगैरह को जो होता है उसको हम सड़ा के बनाते हैं, तो वो हमारे टिश्यूज के लिए बहुत हानिकारक होती है फ्रेंड्स, और हमारे ब्रेन के लिए तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहाँ की गर्म जलवायु है, वहां जो है ये समय से पहले हमें मृत्यु ले आती है, यानी समय से पहले जो है व्यक्ति जो है उसकी उसका शरीर चला जाता है। इसी प्रकार जो शुद्ध हवा है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो शुद्ध हवा है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम गैस छोड़ते हैं, सबको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और हम ऑक्सीजन के रूप में जितने भी जो प्राणी हैं हमारे, वो हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, उसमें जानवर भी हैं और मनुष्य भी, सभी लोग आ गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम पेड़ पौधे के जितना नजदीक रहें उतना अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीजन, पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एक जगह पे यदि ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वो भी उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि वो सांस लेने के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ठीक है, तो सांस के साथ हमारे बहुत से कण भी निकलते हैं, और ताजी हवा इन्हें जब तक दूर नहीं हो पाती हमारे फेफड़ों को भी नुकसान करते हैं। तो रोजाना यहीं पे शरीर है कि हमें रोजाना कम से कम 2 बार, नहीं तो 1 बार तो नहाना ही चाहिए, और पूरे शरीर को अच्छी तरह रगड़ना चाहिए, जिससे कि हमारी जो त्वचा है ऊपर की जो लेयर की है वो साफ बनी रहे। शरीर का जो कोई भी हिस्सा गंदा हो जाता है उसको हमको साफ करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो हिंदू होते हैं वो हमेशा ये मानते हैं कि जो बाहरी दुनिया है वो बेसिकली भीतरी दुनिया का ही एक्सटेंशन, यानी जो हम बाहर से देखते हैं वो बेसिकली अंदर का ही है, अंदर का ही है, जो अंदर होता है वही हम बाहर देखते हैं। तो ऐसा मानते हैं, तो इसीलिए आंतरिक शरीर जो हमारे होते हैं, जैसे हमारी जो हमने बॉडीज अभी बताई, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये भी इन शरीरों को शुद्ध रखने के लिए मंत्रों का जाप भी किया जाता है। ये सब शुद्धिकरण में आ रहा है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दिया जाए, ये सब शुद्ध है। इसी प्रकार हम अपने धर्म को दैनिक घटनाओं में, जीवन की घटनाओं में सबसे आगे रखते हैं जो हिंदू लोग होते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स है वो ये देखेंगे कि हमारे जो ऋषि थे पुराने, वो स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में इतने क्यों पर्टिकुलर थे। तो क्यों एक गंदे या गंदे कपड़ों वाले व्यक्ति जो है वो पूरे एनवायरनमेंट को अशुद्धि से भर देता है, और आसपास तो न केवल हमें अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए अशुद्धता का जो सबसे बड़ी चीज है। फिर दूसरी चीज आई हमारा मनोमय कोश। तो मनोमय कोश जो है वो भी हमारे विचारों और इच्छाओं की शुद्धता पर निर्भर करता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहीं पर अन्न में और प्राणमय कोशों में भी हमें हमें दो चीज ध्यान देनी चाहिए कि पानी पीकर शुद्ध होकर हमेशा, दो संधियां जो होती है, इसीलिए हमारे यहाँ जो सायकालीन संधि है, इसको हम कहते हैं जब 2 वक्त मिलते हैं, उस वक्त की संध्या बहुत जरूरी मानी जाती है, जो हमें शुद्ध करने में हमारी हेल्प करती है। आबाजी तो 2 नंबर पेज तक, हाँ, ओके 1 and 2 पेज। ओके, तो बस इन्हीं के साथ मैं करती हूँ। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताए दे रही हूँ कि ज्ञान, तपस्या, अग्नि, भोजन, पृथ्वी, मन, पानी, प्लास्टरिंग हवा, अनुष्ठान, सूर्य और समय, ये शरीरों के बेसिकली शुद्धिकरण हैं। ये जो यूज होते हैं ये शुद्धिकरण के लिए यूज होते हैं, क्योंकि प्रकृति की हर चीज हिंदू धर्म में एक पूजनीय मानी जाती है। तो हमें इन शब्दों के साथ मैं पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू। वेलकम संध्या रानी जी, और आप भागती दौड़ती जॉब से आई, ट्रैफिक में थक गई। पार्ट 1 आप अपना कीजिए और उसके बाद पार्ट 2 भी कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो इंग्लिश और हिंदी उसके बाद करें। प्लीज गो अहेड। हाँ, हेलो, या Hello, namaste. Good नमस्कार, evening to all. प्लीज। Can you hear me? I'm getting very low voice. No, we can hear you very loud and clear. We can hear you very loud and clear.
आपकी आवाज आ रही है संध्या जी, वेरी We Shall I can hear start? you. आपकी आवाज आ रही है, we can hear you. Okay, go ahead. Hello, namaste, everybody. Good evening. Today's subject, as you know, it's Sanatana Dharma, an elementary textbook of Hinduism, religion, and ethics. First, let's try to understand what is Sanatana Dharma. Sanatana means it's very ancient or permanent Dharma, otherwise Shashwat Dharma bolta hai. Then Indians are known as Sanatani also outside. Sanatani means very, very ancient. Dharma means it's our duty. What is our profession? What is that we are supposed to do? That is our dharma. Dharma means duty. The dharma word has been given to Hindus for this fifth round race and fifth root race and fifth sub race ka word hai dharma, and that has been given to our India, that is Bharata. This is known as Sanatana Dharma. And as you know that this book has been written in 1916 by Dr. Annie Besant, and it was written in 1916, that is before independence, when our culture was very much alive and people used to admire. And Indians are known for India is mainly known for its unity in diversity. Unity is there, and we respect all religions. In our own religion, there are committees, sub-community, then sub-communities. There are a number of sub-communities are also there in each individual community. Not only one community admires the other community, the other communities, other religions, their customs, everything even we follow. Even in one state only, there are different communities exists. Ultimately, why all these religions and why we appreciate all these means, because all of us have come from one source only, that is Parabrahma. So whatever we believe, the other community, other religion people also believe the same thing. That's why today we have taken the subject on the Hindus' customs and rites, mainly samskaras, shraddhas, shaucha, and sacrifice. Samskaras, why it is required? Samskara, right from birth to death. There are so many varieties of samskaras are there. Then Shraddha. Shraddha, when it will be done means after death. Then Shaucha. When we are alive only, we should be following the Shaucha. That's why in the golden stage, it has been written a clean life. It starts from clean life till we reach that ultimate wisdom. Then sacrifice. Sacrifice means what we are supposed to do in this life. When we are alive, what is our duty to us and to the world around us. Then let's take up samskaras. Every religion prescribes a number of ceremonies or rites to be performed by its followers. Whomsoever follows, whatever they follow, they have to perform. The use of these ceremonies are to help the jiva to conquer and purify his sheaths. Sheaths means our koshas. To bring to our aid the superior intelligence such as devas and rishis. They all protect us, help us to evolve ourselves, to improve the atmosphere around us, and to make it easier for us to steady and concentrate the mind. These are all the things. And where samskara is concerned, there are 16 ways of samskaras. When the child is in the womb only, there are 4 samskaras will be done. Number 1 is nuptial. That is what we say. That is garbhadhana samskara. Next one is pumsamana samskara. That is conducted when the mother has conceived between second and third month. Then Seemanto Nayana. Seemanta we say. That is 4th month, 5th month, 7th month. Some people will follow 8th month. Then Janana or Jataka Karma Samskara. That is birth. To remove all the negativities. At what time the child has taken birth, in which place, everything we see.
That Jataka we say, no, like that. All these things before the child gets birth. Then piercing the ears, that will be done on the 12th day of the child's birth. Then naming ceremony. Naming ceremony is done within 1 week or month or whenever it is convenient. In that also naming ceremony, they will whisper. It's not that loudly they say. In the beginning, the father will whisper its name in the ears. Especially the elder's name will be kept. Then whatever the alphabets have come, accordingly, the name will be kept. Then first time the baby will be taken outside the home. That will be around 4th month or 5th month, to show it to ancestors, etc., etc. Then Annaprashana. This will be done in the 6th month. They will give rice. Then Chaula, that is Mundana we say. Mundana is a very grand function that will be done in the 1st year or 3rd year. Then Vedharamba Samskara. Veda, they will start the kid to learn Vedas at the age of 3. Not like babysitting, LKG, UKG, not like that. So they used to start till the age of 3, the kid used to enjoy. Then Upanayana Samskara. Brahmins will do that Upanayana at the age of 8. Then Kshatriyas will do at the age of 11 and Vaishyas used to do at the age of 12. Then Vidyarthi Samavarthana. That is like how we do our convocation. No, those students used to go to ashram. They used to learn everything. After the learning as a student, it gets over. Then that ceremony used to take place. That is known as Vidyarthi Samavarthana. Then after it comes back to the home, then wedding ceremony will be done. Then Vanaprastha Samskara. That is one after the person sees the grandchild. That is next generation. So 2 generation, it's a must that he has to see. Then only he can leave the house and go and stay in the forest. Then Sannyasa Samskara. Even there also he has to leave. No possession at all. Then he will take sannyasatva. Then Marana or Antoshti Samskara. These are all the samskaras. After we learn all these samskaras, what one do is Shraddha. In Gaya, we all go, not only see the Gaya, we do some samskaras also in Gaya. Shraddha is the name of the ceremony performed to help the Jiva. Because we are not this body, we are part of this. Jiva is there. Not only the matter, the spirit is there. Who has put off its body in death. By those who remain in this world, they will do this Shraddha. Shraddha will be done to a dead body. When the body is dead, then the Shraddha will be done. How this Shraddha to be done means the body after its death, especially within 4 hours, we are supposed to do it. But we keep the body these days, 2 days, 3 days, like that, we retain the body. But it should be done before it gets started decaying. Then the body will be taken. The best thing is to burn, not to bury. Why burn means it will start detaching itself, because only ashes will be remaining. That ashes will be collected on the 3rd day, and that ashes will be left, and when we have to go and leave in the running water. Why running water means it should not be stagnant. It has to flow. That's why we chant that Gangecha Yamunecha Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidam Kuru. So in Karnataka, we leave the ashes in Kaveri water. Then the body will, that is the Jiva will take birth in Pranamaya Kosha. That Pranamaya Kosha also, it starts decaying on the 3rd day or within 36 hours of the death. Then the burning is the best way to destroy the dead body. Because the Pranamaya Kosha also, it has to leave. Otherwise, if we bury, then the body will decaying very slowly and it sends out poisonous gases. And this is very bad to those remaining behind. That is the family people. Here they will say that you have to leave the house.
because the person has died at this particular point of time, and all these things people will say. And while doing this Shraddha, the chanting of mantra is very, very important. So the senior person, senior priest will come and he will chant particular mantras, and he will be given some gifts also. It's not free of cost, because one has to do this 7 years before and 7 years after. It will, the whatever the power it is there, it will remain. That is the main thing why we have to do Shraddha. This is the meaning. Gifts to be given to a deserving Brahmin, not to all. Deserving Brahmin, for the sake of benefit to the Pitris in the proper time and place and with faith, are known as Shraddha. What is that we are giving is, we first and foremost is, we can give him fruit or umbrella, chappal, plates, clothes, rice, cow, or gross to the cow, gold, silver, copper, brass, or cash. These days, of course, we give cash only. So Shraddha should be offered to the Pitris day by day with corn and water, or even roots, fruits, water, which brings them satisfaction. When the person dies, before we do all this Shraddha, the third day before going, also actually in our community we bury. Third day we give whatever the person used to like, as prasada we used to offer. Of course, cows will come, otherwise crow will come and eat. This is the thing. If Jiva has done more good, Dharma means in the astral plane, it will go in a take birth in higher level. Otherwise, it will take birth in lower level. One by one, it has to get evolved. Then it has to get that plane, whatever the karma was due, it has to go. Then only it will take birth in higher levels. Then by offering the 16th day Shraddha, that is first day after the death, up to 16 days, varieties of mantras will be chanted and so many people are invited. Then the 16th day final ceremony will be taking place. That is known as Sapinda Karana, rites for the father. And who will do the Shraddha means the person who has died, the son. Particularly the first son will do all this puja, performing puja, all these things. Thank you. Hello, You can continue with part 2. Abhi. Yeah, so that then Okay. Gujarati will come and then finally Hindi. Okay, please go ahead. Then the third thing is known as Shaucha. Shaucha means when we are alive only, we are supposed to do this Shaucha. It consists rules laid down for keeping the body pure. Purity is very, very important, and thus ensuring physical health and strength. Health is also equally important. Simultaneously, strength is also equally important. The Jiva is a portion of God, enveloped in matter, have treated obedience to the laws of nature as a religious duty. And rishis, munis, all these people knew this. The visible body, whatever we see every day, with its invisible, that is etheric double, the pranamaya kosha, being made of physical materials, it is necessary to use physical means to make them pure and to keep them pure, and we need to understand them to do this. Not only we have to cleanse our physical body, even our astral body also has to get, that is, sorry, not astral body, it is pranamaya kosha. The visible body, that this is Annamaya Kosha, is composed of particles drawn from the food we eat, the liquid we drink, the air we breathe. That's why all these things should be very, very pure. We have to, whatever the food that we take, that makes difference. Whatever the drink that we take, that also makes a difference. And the air, not only this, even the environment in which we are leading our life also makes a difference, because saints or whatever it is, they cannot stay in a shabby thing. Whatever the clothes that we wear, even that should be neat and clean and presentable. In Kannada, we use the word as muddy. They have to wear washed clothes only. Morning
The minute we get up, what is that we are going to do? First and foremost, we will use the bathroom, brush, we wash our face, everything. Then only we start doing things. Before and all, what people used to do is after taking bath only, they used to enter the kitchen. They used to pour water to the tulsi, all these things. And people used to rear cows and all. So they used to clean cows. They used to feed the cows. Then they used to start and cooking. Then offering to the god, then only they used to consume food. All these things, in case if we take impure things means or stale things, the life is then departing. Then they are on the way to death. So we have to decide what is that we are supposed to eat and drink. Liquor is 100% banned. We are not supposed to take liquor. We are not supposed to take the dead thing or animal or flesh. Where they say that we can eat this, including egg, we are not supposed to eat. I have read one article written by Annie Besant only. Why means it will disturb us because our body itself is filled with 3/4 of the water. So when we take the water or liquid, coffee, tea or milk, actually milk is a whole food. We can take all these things, but in a moderate way. And we have to take 3 to 4 liters of water, that to pure water. Olden days and all, water used to come very neatly. There is no filter and all those things. We have to drink good water. Not only that, we are to breathe good oxygen where greenery is there, not polluted. That's why even Radha Baniya used to say, already we have conditioned our mind why to use air condition. Otherwise, if we sit in air condition, what will happen? The same air we are breathing, though they will say that it will circulate, but we are breathing the same thing and inviting so many ways of problems. Not only it will create problem to us, it will create problems to others also. That's why the shaucham is very, very important. Shaucham not only in these ways, even shaucham of our thought. It's very important. Annie Besant has written during that time only. Our thought should be pure. It should be always helpful. Morning, what is that we have to do? We have to chant one prayer. What is that prayer? Morning we will get up and say, Karagre Vasate Lakshmi, Karamadye Saraswati, Karamule Stite Gauri, Prabhate Karadarshanam. Right from morning, we see our hands. Everything we praise our God. Before going to bed, we will do self-introspection. Always our thoughts should be very, very good. This is what the Shaucha says. Shaucha is very important. Then lastly, what is that we are supposed to do? While eating also, we chant some mantra. Then we pour little water here and there. Then we will keep little food on the ground. Then only we start consuming. Then we have to wash our hands. We have to wash our foot first and foremost. Before we enter the kitchen or dining hall, we have to wash both the hands. Before start eating, we have to wash our mouth also. Then we take 3 times prokshane. Then we will drink. We will chant Gayatri mantra. We offer food to some person who is in need also. Then we will eat. While eating, we are not supposed to drink water. While eating, we are not supposed to even talk. Can we just imagine? These days, eating means mobile or TV. Those days, all these things were never there. Because what purify our thing means, number one is wisdom in our thought. Austerity, fire, food, earth, mind, water, then plastering, wind, rights, the sun and time are the purifiers of our body. That's why we have to purify. Then only our manomaya kosha will be properly formed. Then we can think in our buddhic level. All these rules and regulations we have to follow. Not only this, we follow Ekadashi also, fasting. Today is Tulsi Puja plus Ekadashi. Today, one is supposed to do some fasting and some puja. Fasting is also good for our health. All these things we are supposed to perform.
Then the last thing is sacrifice. Our form develops with accumulation. Our spirit develops with sacrifice. Where exactly we stand means we are in the process of developing ourselves in the spirit way, not in accumulation by giving. What is that sacrifices that we are supposed to do means every day we are supposed to follow 5 daily sacrifices, that is known as great sacrifices to be offered every day. These are sacrifice to rishis or Vedas, sacrifice to devas, sacrifice to pitris, sacrifice to men, and lastly sacrifice to bhutas. These are all the 5 sacrifices each one is supposed to do, irrespective of community or age or anything. Any human being, we are supposed to do all these things. With the person who is having a sound mind has to do all these things. Study and teaching. Every day, a man should study some sacred book. That's why adhyayana or study is a must. Say only sacred books, not novel, not watching TV or some serials. It should not be there. While studying also, one should be very, very careful. One has to think, rethink. If we study for 5 minutes, we have to contemplate on for at least for half an hour or 1 hour. The study should be like that. The thinking process should be there. The thought is more important than the amount of quantum, the how many pages that we read. That is not a must. We have to read, but simultaneously we have to understand which is applicable to our life, daily life. Not only it has to help us, whatever this book that we study to help others. Whatever we study, our duty is to even share what is that we have studied. This is the known as study. This is the sacrifice that we are giving to rishis and Vedas, because all the information, all the wisdom from where we have got means from that is the source. So we should be always thankful to them. That's why we have to study, learn in order that we may teach. This is the main purpose of studying, is to teach. The second sacrifice is sacrificing to devas. Devas means homa, havana, whatever we perform. This is, we are giving food to our nature. Whatever the nature has given, we are taken. Every day we are taking this, that, everything. What is that in turn we are giving to nature? Nothing. So one has to perform homa. In that gas tragedy, all the families collapsed, they all died. But in one family, they used to, that is a Brahmin family, they were doing homa every day. Only that family survived. That was maybe in 1980s, there was one major gas tragedy happened. So the person who was doing homa, his lungs capacity was very good, and there was no toxic in their body. That's why we have to perform homa. That is, we are giving food to the nature. How we need food to survive ourselves, even nature. No? In turn, we are not giving anything to nature. So that's why this homa is very, very important. Pouring ghee, pouring milk, giving very good wood to eat, everything. Even in Bharat Samaj Puja, we do homa. Om Suryaya Namaha, Suryaye Idan Namama, Om Prajapataye Namaha, Prajapataye Idan Namama, like that. So nothing is ours, everything we are giving. Then the outer sacrifice to the Pitris is Tarpana, or offering of water to the older generation of our family, to our ancestors. The inner meaning is recognition of the great debt that we owe to the past. Today we are in this position, it's because of whom? Because of our ancestors. So let us be thankful to them. Let us remember at least once in a while, at least every day. That's our duty. Then the sacrifice to men or hospitality. At least when we eat, as the gruhastha, we are supposed to offer food who is in need. At least one atiti ko we have to offer food, proper food, good food, not the food which is wasted or which is extra.
we have to call and make them sit next to us and offer. This is our tradition. Then the sacrifice to bhutas or to creatures is putting a little food on the ground before beginning the meal. This is the custom which we are supposed to follow for the invisible lower entities around us, and placing of the remains of the meal is a suitable place for vagrant men and animals, practice of kindness and consideration towards them, sacrifice to superiors, his equals and his inferiors. They establish the harmonious relations on which the happiness and prosperity of families and of nations depend. So the rishis with Veda are steady, devas with Homa, pitris with Shraddha, men with food, and bhutas with Bali. Very recently, we have performed Bali Padhyami. After Deepavali, 6th day, we do this also. So thank you very much for giving me this opportunity to share few things of our Indian customs and rites and rituals. Thank you once again. Thank you so much, Sandhya ji. Be there. And now, Rajeshwari ji, please go ahead with the second part of your Gujarati version. Then it will be followed by Hindi. And then we will be open to all of you who would wishes to put any questions, can put now on the chat box. Thank you. Kindly unmute yourself. Rajeshwari ji, unmute करिए. નમસ્કાર સંધ્યા Yeah, go ahead. રાણીજી, તમે બહુ સરસ રીતે you have explained the things. આપણે પેલા જોયું હતું કે પ્રકરણ ઓલામાં આપણે 4 વસ્તુને જોઈ હતી, એમાંથી શૌચાલય પર આપણે આવ્યા હતા અને મેડમે કીધું કે દ્રશ્યમાન શરીર જે છે અને પ્રવાહી આપણે પીએ છીએ, આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ અને સૂક્ષ્મ કણોના સતત વરસાદથી બનેલા જે આપણા માટે ખૂબ નાના કણ છે, પરંતુ તે પણ સતત પ્રભાવિત થાય છે. તેમણે એ પણ કહ્યું, આપણે શોર્ટમાં પહેલા જોઈ લઈએ કે મૃત્યુના માર્ગે છે તે બધા માણસ ઓછાથી ઓછા અશુદ્ધ છે, કારણ કે તેની અંદરનું જીવન તેમાંથી નીકળી ગયું છે અને શુદ્ધ થવા માટે તૈયાર છે. અને આગળનો તબક્કો છે તે વિઘટનનો છે, એટલે કે સરળ સ્વરૂપમાં વિભાજન છોડના ઉત્પાદનોમાંથી બનેલા શરીર કરતા તેમાંથી બનેલું શરીર રોગ માટે વધુ જવાબદાર છે. જો જેવી કે હર્બલ અર્થ, ચા, કોફી, કોકો બધું હાનિકારક છે, પણ તે લિમિટેડ લેવામાં આવે, ઓછું લેવામાં આવે, જેટલું 8-10 કપ ચા પીવાની એવું નહીં, થોડું લેવામાં આવે તો ઘણીવાર તે ઉપયોગી પણ બને છે. તેમણે એ પણ કહ્યું કે દૂધ એ સૌથી શુદ્ધ પ્રકારનો ખોરાક અને પીણું છે. દરેક પ્રકારનું પીણું જેમાં વાઇન હોય છે તે અશુદ્ધ છે અને આપણા પોતાના શરીર માટે તે સૌથી વધુ નુકસાનકારક છે. એટલે કે વાઇન જેમાં વિઘટન થઈ ચૂક્યું છે, એટલે આપણી શરીરની પેશીઓને તે નુકસાન પહોંચાડે છે અને મગજ માટે તે અલગથી એક ઝેર છે. ખાસ કરીને ગરમ આબોહવામાં, એટલે કે આપણા દેશ માટે તે ખૂબ હાનિકારક છે. અકાળે સડો અને વહેલા મૃત્યુનું કારણ પણ બની શકે છે. શ્વાસ લેવાથી શરીરના અંદર ભાગમાંથી કચરાના કણો બહાર નીકળી જાય છે અને જ્યાં સુધી તાજી હવા તેમને બહાર ન કાઢે ત્યાં સુધી તે આપણા અને અન્ય લોકોના ફેફસામાં ફરી જાય છે. એટલે સ્વચ્છતા ઉપર ખૂબ જ ભાર મુકાયેલો છે આપણા જે પૂર્વજો છે એમણે. આ કોરોના આવ્યા એની પહેલા પણ જે લોકો આપણી એજના હશે જોયું હશે કે આપણા પૂર્વજો છે વારે ઘડી હાથ ધોવાનું કહેતા હતા. અમારા બ્રાહ્મણોમાં એટલા જ ઉઠાનું હતું, જેને કારણે સ્વચ્છતા રહેતી હતી. એ સ્વચ્છ અને તાજું શરીર, જે પણ અંગો, પગ, હાથ વગેરે ગંદા થઈ ગયા હોય, બહારથી આવીને હાથ પગ ધોવાનું અને કપડાં બદલવાનો પણ રિવાજ હતો. જમ્યા પહેલા અને પછી હાથ ધોવાનું ક્યારેય ન છોડવું જોઈએ. હાથ ધોયા વગર ખાવાથી અથવા તો અન્ય હાનિકારક કણોનું જોખમ તેનાથી વધી જાય છે.
હિન્દુ હંમેશા બાહ્ય જગતને આંતરિક જગતના પ્રતીક તરીકે જોવા માટે ટેવાયેલા છે. તે આંતરિક શુદ્ધિકરણના વિચારને બાહ્ય સ્થાન સાથે જોડી દીધા છે. ભલે રિચ્યુઅલ્સ પ્રમાણે હોય કે નાવું જોઈએ સવાર ઉઠીને, પણ એની પાછળનો હેતુ છે ચોખ્ખાઈનો છે. ધર્મની રોજિંદા જીવનની સૌથી સામાન્ય ઘટનાઓમાં વણી લેવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓને આ શીખડાવવું જોઈએ. ઋષિ સ્વચ્છતા પ્રત્યે આટલા વિશેષ કેમ હતા? ગંદુ શરીર ધરાવનાર અથવા ગંદા કપડાં પહેરનાર વ્યક્તિની આસપાસની હવા પણ અશુદ્ધ કણોથી ભરાઈ જાય છે અને આસપાસના લોકોને પણ નુકસાન કરે છે. પ્રાણ્ય કોષની શુદ્ધતા એના ચુંબકીય પ્રવાહો પર આધારિત છે. કેટલીક વનસ્પતિ ઉત્પાદનો અને અન્ય છોડ અન્નમય કોષ માટે હાનિકારક હોવા છતાં પ્રાણમય કોષ માટે તે ખૂબ જ વધારે પડતા હાનિકારક છે એવું કહે છે. આલ્કોહોલના ઉત્સર્જન અને અન્ય લોકોના મહત્વપૂર્ણ કોષો દ્વારા સૌથી વધુ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થાય છે. વધુ મહત્વની વાત એ છે કે વ્યક્તિની પોતાની માનસિક જગ્યા છે અને તેના દ્વારા તે અન્ય લોકોને મદદ કરે છે. માનસિક જગ્યા પણ હોય છે. જેવી રીતે આપણી શારીરિક જગ્યા હોય છે એવી રીતે માનસિક, એટલે મન પણ એટલું ચોખ્ખું અને સ્વસ્થ હોવું જોઈએ. એને મનોમય કોષ કહે છે. એમાં એના જોખમો છે ખરાબ સંગત. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓમાં જો ખરાબ સંગત લાગી જાય તો એ લોકો બહુ વિનાશ તરફ જાય છે. વિચારો અને ઈચ્છાઓ અશુદ્ધ હોય તો તે શુદ્ધ ભૌતિક આવરણ કોઈ રીતે શુદ્ધ અને સ્વસ્થ ન હોઈ શકે. જો ઘમંડી, લાગણીશીલ, કઠોર, ઘમંડી, શંકાસ્પદ હોય તો તે કોષોમાં એટલી ઝડપથી અશુદ્ધિ થઈ જાય છે કે કોઈ પણ નિયમો તેને ધોઈ શકતા નથી. પછી એમણે વાત કરી 5 દૈનિક યજ્ઞોની. આપણે જોયું છે કે યજ્ઞનો, આપણે સેક્રિફાઈસને અહીંયા મેં યજ્ઞ કહ્યો છે. આપણે જોયું છે કે યજ્ઞનો નિયમ છે તે માણસની કીર્તિ તેના અનુસાર સ્વેચ્છાએ વર્તમાન છે. આ જ હેતુ માટે ધર્મ તેમના અનુયાયીઓને તાલીમ આપે છે. પવિત્ર ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખિત વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞોને અવગણી શકાય. અત્યારે આપણે અવગણી રહ્યા છીએ, પણ અવગણી શકાય નહીં. દરરોજ કરવામાં આવતા આવા જે 5 યજ્ઞો છે એમના પર તેમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. એમાં સૌથી પહેલું છે ઋષિઓ અને વેદોનો યજ્ઞ. એમાં વેદ ને એ બધું જ આપણે દરરોજ વાંચવું જોઈએ. દરરોજ નહીં તો થોડુંક, એમ કે દાખલા તરીકે આપણે 5 કલાકમાં, અત્યારે તો કોઈ વાંચતું નહીં હોય 5 કલાક, 1 કલાક પણ વાંચતા હોય તો આપણે 15-20 મિનિટ વેદ વિશે પણ વાંચવું જોઈએ. દેવતાઓ માટે બીજી વાત કરીએ આપણે દેવતાઓ માટેનો યજ્ઞ. એમાં હવન, યજ્ઞ, પાઠ, પૂજા વગેરે જે પહેલાના જમાનામાં કરતા હતા, અત્યારે થોડા અંશે પણ એને કરવું જોઈએ. કે જ્યારે કોઈ મોટી આફત આવી જાય ત્યારે જ આ યજ્ઞ કરતા હોય એ લોકોને ઓછું નુકસાન કરે. યજ્ઞનું કારણ શું છે કે એના લીધે હવા જે ગરમ થાય છે ને ગરમ હવા આપણા ફેફસામાં જાય છે, એ ફેફસાને શુદ્ધ કરે છે, આજુબાજુના વાતાવરણને શુદ્ધ કરે છે. આ યજ્ઞ જે છે એ આપણે એમ માનતા હતા કે યજ્ઞમાં જે દાનવો હાડકા નાખે અને એમાં વિઘ્ન હતા, એ બધું વાર્તામાં નથી, એ ખરેખર છે કે કોઈ પણ માણસ કઈ યજ્ઞ કરવા જાય તો અત્યારે એમ કે નહીં કરવાનું, સોસાયટી ના પાડે કે એવું, પણ ખરેખર આ હવન કરવાને કારણે આજુબાજુનું વાતાવરણ ખૂબ શુદ્ધ છે. એટલે આ બુકનો જે મુખ્ય હેતુ છે એ શુદ્ધતાનો છે. પિતૃઓ માટેનો યજ્ઞ. પિતૃનું તર્પણ વિશે પણ એમણે વાત કરી કે આપણે શ્રાદ્ધનું આપણા હિન્દુ ધર્મમાં છે કે આપણે બોડીને જલાવી દઈએ છીએ, એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરે છે, પુત્ર કરે છે. તો એ બધા જે રિચ્યુઅલ્સ છે, એ બધા જે વિધિઓ છે, એ એટલા માટે છે કે આપણા પિતૃઓને, આપણા જે એન્કેસ્ટર્સને કારણે જ આપણે છીએ, આપણા પિતૃઓને કારણે જ આપણે છીએ. તો એમના પ્રત્યેનું જે આપણું ઋણ છે એ આપણે આવી જે બધી વિધિઓ કરીએ એનાથી એના માટે આપણે એને કંઈક આપણે એમને આભાર વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. અને એ પુત્ર દ્વારા કરે છે એટલે જો પિતાના જે બધા સારા ગુણ હોય એ પણ એનામાં આવી જાય છે. એ પિતૃઓ માટેનો યજ્ઞ કર્યું. બીજું એમણે કીધું કે મનુષ્યો માટે બલિદાન. બલિદાન શબ્દ વાપરીએ અહીંયા આગળ એમને. તો મનુષ્ય માટેનું બલિદાન કે આપણા ઘરે કોઈ મહેમાનો આવે એને આપણે એવું નહીં કે આપણે વધી છે એટલે આપણે ખાવાનું આપીએ, પણ સારું એનો આગતા સ્વાગતા કરે. આતિથ્ય એ પણ એક સંસ્કાર છે, આતિથ્ય કરવું. એ આતિથ્ય ભાવના એ પણ એક મનુષ્ય માટેનું એક બલિદાન છે. કોઈ ગીરી માણસ હોય, કોઈ જરૂરિયાત વાળા માણસ હોય, આપણને ખબર હોય આપણા ફેમિલીમાં પણ હોય
તો એને આપણે બને એટલી મદદ કરવી જોઈએ. એ થિયોસોફીનો તો મૂળ સિદ્ધાંત છે મદદ કરવાનો. તો મેઇન મદદ કરવાનું એ મનુષ્યો માટેનું બલિદાન છે. અને પછી એમણે કીધું કે ભૂત માટેનું બલિદાન, એટલે કે જે જમીન પહેલા અપોષણ મૂકતા હતા, આપણે જમીએ ત્યારે સાઈડમાં બધું ભાત ને બધું રાખતા હતા કે જેથી કરીને જમીનને એનું જે આપણે જમીન પર આપણે જે ચાલી રહ્યા છે એના પ્રત્યેનું એનું ઋણ અદા થાય. અને બીજું નાના નાના પ્રાણીઓ જે કીડી છે એને પણ પોતાનું પોષણ મળી રહે, એવો એનો હેતુ હતો. આ બાહ્ય સ્વરૂપ અને આંતરિક અર્થ છે. બલિદાન આપનાર સંપૂર્ણ યજ્ઞ જીવન તરફ દોડી જાય છે. અને ચાલો આપણે સમજીએ તો વેદોનો અભ્યાસ એ ઉપદેશ છે. આમ કીધું કે દરરોજ માણસે અમુક પવિત્ર ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ચલો ગીતાનો એક અધ્યાય વાંચી લો, તો એક યજ્ઞ કરવો જોઈએ જે શક્ય નથી, પણ થોડાક શ્લોકો વાંચીને અને તેનું ધ્યાનપૂર્વક ધ્યાન કરવા પણ કરી શકાય. વાંચેલા જથ્થા કરતા સાવચેતી અને વિચારોની નિકટતા વધુ મહત્વની છે. કે આખું મહાભારત વાંચીને આ વાંચીને આ વાંચીને એ બધા જથ્થા કરતા સાવચેતીનો જે નાનકડો સિદ્ધાંત રોજ એક નાનો શ્લોક વાંચીને એને સમજીએ એ વધારે જરૂરી છે. દેવતા માટે બાહ્ય બલિદાની શું છે? હોમ હવન છે. અને સુપર ભૌતિક વિશ્વ સાથેના આપણા સંબંધની અનુભૂતિ અને વિશ્વની પરસ્પર નિર્ભરતા આપણે પ્રકૃતિ સાથેના સુમેળમાં રહેતા શીખવું જોઈએ, એવું કહેવા માંગે છે આ બુકમાં. ભૂતકાળનું શું ઋણ છે અને તેમના પૂર્વજોનું શું ઋણ છે? મનુષ્યો માટે બાહ્ય બલિદાન એ આતિથ્ય છે. દરરોજ સાચા અર્થને અને પોતાના કરતા ગરીબ વ્યક્તિને ભોજન આપવું જોઈએ, ભૂખ્યાને ભોજન આપવું જોઈએ. જેમની પાસે વસ્ત્રો નથી એમને વસ્ત્ર આપવા જોઈએ. આપણી પાસે 50 હોય તો આપણે એટલીસ્ટ એમાંથી 4-5 નું દાન કરી શકીએ. અને બેઘરને આશ્રય આપવો જોઈએ, આપણાથી જેટલું શક્ય હોય એટલું. દુઃખીઓને સાંત્વના, આપણી સાથે કોઈ વાત કરવા આવે, માણસના મોઢે જ માણસ વાત કરવા આવે ત્યારે એનું અપમાન ન કરતા એને સાંત્વના મળે એવી રીતે એની સાથે વાત કરવી જોઈએ. હવે બહુ સરસ એમને કહ્યું છે કે અમીર છે તેઓ ગરીબના કારભારી છે. અમીર જે લોકો અમીર છે, જેને ઈશ્વરે કંઈક આપ્યું છે, એ ગરીબ લોકોનો કારભારી બનવા માટેના છે. ભૂત માટેના બલિદાનમાં પણ આપણે વાત કરી કે અમુક જે કીડિયારું પૂરવાની વાત હતી એ પણ ભૂત માટેની જ વાત છે કે કીડિયારું જે આપણે પૂરીએ છીએ, કીડીઓ માટે પણ આપણે ભોજન આપણે લોટ કે એવું કઈ આપતા હોઈએ છીએ, એ પણ ભૂત માટેનું છે. નીચા લોકોની સાથે સુમેળભર્યા સંબંધો સ્થાપિત કરવા જોઈએ, જેના પર પરિવારો અને રાષ્ટ્રોની સુખ અને સમૃદ્ધિનો આધાર રાખે છે. ઈશ્વરની ઈચ્છા મુજબ જીવનના ચક્રને ફેરવે છે અને આ રીતે વિશ્વના વિકાસમાં મદદ કરી શકાય છે. દરેક વ્યક્તિને શીખવાનું અલગ એકમ નથી, પરંતુ એક મહાન સમગ્રતાનો એક ભાગ છે. એક વિશાળ શરીરમાં એક કોષ છે અને તેથી તેની ખુશી અને પ્રગતિ ફક્ત ત્યારે જ સુરક્ષિત થઈ શકે છે. શિક્ષણ એ બ્રહ્મયજ્ઞ છે, તર્પણ એ પિતૃયજ્ઞ છે, હોમ એ દેવયજ્ઞ છે, ભોજન એ ભૂત યજ્ઞ છે, અતિથિઓનું આતિથ્ય એ માનવ યજ્ઞ છે. માણસે હંમેશા વેદોના અભ્યાસ અને દેવતાઓના કર્મકાંડમાં વ્યસ્ત રહેવું જોઈએ. મહેમાનો પણ જ્યારે આવે છે ત્યારે પરિવારના સભ્યો પાસેથી મદદની અપેક્ષા રાખે છે. તેથી જે જાણતા હોય એને એની મદદ કરવી જોઈએ. ઋષિ મુનિઓએ વેદોનો અભ્યાસ કરીને દેવોને ઘર દ્વારા, પિતૃઓને શ્રાદ્ધ દ્વારા, મનુષ્યોને ભોજન દ્વારા અને ભૂતોની યજ્ઞ દ્વારા પૂજા કરવી જોઈએ. આપણે હિન્દુઓમાં તો જમતી વખતના પણ શ્લોક છે, યાત્રા કરવા જોઈએ એની પહેલાના પણ શ્લોક છે, એ બધું કહ્યું છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ કે આપણે આજે બહુ અલગ જ વિષય વિશે વાત કરી અને સંધ્યારાની મેડમે જે ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કર્યું એના માટે થઈને ખૂબ Thank you, Rajeshwari ji. Thank you so much. Be there. Abhaji, please go ahead. हिंदी वर्जन आपका करिए. अभाजी, प्लीज गो अहेड. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? या आप ऑडिबल है. ओके, थैंक यू. तो आइए अब हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं और कुछ थोड़ा कम आवाज आ रहा है. हाँ, एक थोड़ा आज मेरा नेट वीक है. हाँ, ये बढ़िया है. तो शौचम के बारे में हम बात करेंगे आज सेकंड पार्ट से. शौचम का क्या मतलब है, पहले हम इसको जरा क्लेरिफाई कर लें. इसका मतलब है शुद्धता. बेसिकली शौचम जो है इसका अर्थ है शुद्धता.
और ये शुद्धता न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि हर स्तर पे है। इसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े अच्छे ये रखे गए थे कि हर क्षेत्र में शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए थे। उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी था फ्रेंड्स। तो बेसिकली फिजिकल लेवल से शुरू होता है हमारा, जैसे मैंने बताया कई लेयर्स हैं, उसमें फिजिकल से शुरू होता है, फिजिकल है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा विजिबल होता है हमारे। तो उसमें क्या है कि हम ये मानते हैं जो जीव है, जो आत्मा है, लेकिन जब यहाँ पे आता है तो उसको हम कहते हैं जीव या जीवात्मा कहलाता है। तो बेसिकली वी आर द पार्ट ऑफ द डिवाइन, ये तो सबको मालूम ही है। लेकिन यहाँ पे आके चूंकि हम यहाँ इस पंच अशुद्धा प्रकृति में फंसे हुए हैं तो माया के सब है, हमारा जो फिजिकल है वो भी एक रूप है। तो जो फिजिकल फॉर्म है, जो फिजिकल कणों से बना हुआ है, जिनको हम एटम्स या परमाणु कहते हैं, वो जो है चूंकि प्रकृति में आ गए हैं तो प्रकृति के जो रूल्स हैं उनका पालन करना भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये माना जाता है कि हमारे जो इथरिक डबल बी है, जो हमारा दिखाई देता है दृश्य शरीर, उसके हर लेयर को शुद्ध करना है हमको। और शुद्ध करने के लिए चूंकि प्रकृति में है हम सभी, वी आर ऑल लिविंग इन द नेचर, तो नेचर किस तरीके से शुद्ध करेगी और हमें कैसे उस नेचर में रहते हुए अपने आप को शुद्ध करना है, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा शरीर, जो हमारा अन्नमय कोश से बना है, जो हमारी लेयर है फर्स्ट, जिसको फिजिकल हम बॉडी कहते हैं, वो अन्नमय शरीर कहते हैं उसको हम। जो हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि जो भी हम खाते हैं या पीते हैं या हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण है, जो भी है, हम ले रहे हैं बेसिकली, जितने भी कण हैं वो हम ले रहे हैं, और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है बेस, वो जो परमाणु हैं वो हम एक क्षण प्रतिक्षण ले रहे हैं, वो एवरी मोमेंट हम उनको ले रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक जो शरीर है वो डेड पार्टिकल से नहीं बना है फ्रेंड्स, वो लाइव पार्टिकल्स हैं, क्योंकि डेड पार्टिकल जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो जो छोटे छोटे जो चीजों से बना है जिनको परमाणु कहते हैं, और भी उन परमाणुओं के जो ग्रुप्स होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे धूल का भी एक कण लें तो धूल के जो कण में उसमें असंख्य माइक्रोब्स होते हैं। यदि उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो हम देखेंगे उसमें भी लाइव है, वो कोई डेड नहीं है। हमें लगता है डेड है लेकिन वो डेड नहीं है। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ पत्थर, इसीलिए हमारे यहाँ प्रकृति पूजा की जाती थी। हर चीज पूजनीय है क्योंकि हर चीज लाइव। तो हमारे यहाँ कहा भी जाए ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मैं भी वही हूँ। तो वो जो चेतन का जो अंग है, तो हर चीज चेतन है, हर चीज जो है वो लाइवली है। तो जो भी हमारे पास की है, जो भी हम कुछ छूते हैं तो बेसिकली हम पास करते हैं अपनी ऊर्जा उसको, उसकी ऊर्जा हमारे पास आती है, क्योंकि हर चीज जो है वो लाइव है। तो यदि हमें स्वस्थ रहना है, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो केवल हम क्या लेंगे, जो प्योर है परमाणु है, हम जो शुद्ध परमाणु है, हम कोशिश करना चाहिए हमें उन्हीं परमाणुओं को हम ग्रहण करें। जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि देवर ऑल साइंटिस्ट, उनको ऋषि मुनि जो है वो अपने साइंटिस्ट थे। तो वो हर चीज की बहुत छोटी से छोटी, बहुत ही सटलर लेवल पे उन्होंने ये सब रिसर्चेस की और उसके बारे में हमें बताया। दूसरा जो हम नेक्स्ट आता है, जो इम्पोर्टेंट चीज, वो हमारी डाइट आती है। जो हम भोजन खाते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। और जैसा कि पहले बताया, हमारी संध्या जी ने भी बताया, उन्होंने बताया कि जो हमारा जो प्लांट बेस्ड डाइट है, क्योंकि वो लाइव है, जो भी ताजे फल हो गए, अनाज हो गए, ये जो जड़ हो गई, जो हम आलू और इनके रूप में जो हम रूट्स भी खाते हैं, ये बेसिकली प्राण ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। जब हम इनको खाते हैं तो ये प्राण ऊर्जा को हमारे बढ़ाते हैं, इसीलिए हम उनको ग्रहण करना चाहिए। ये भी यदि बासी हो जाते हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए। यानी जितना हम फ्रेश लें अपने शरीर के लिए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बेसिकली हर चीज लाइव है। तो बेसिकली जितना हम लाइव फॉर्म में लेंगे, उसके फ्रेश फॉर्म में लेंगे, उतना हमें ज्यादा फायदा देगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो नॉन वेजिटेरियन है उसको हम क्यों डिमोट करते हैं, उसका कारण यही है कि जब भी हम मांस खाएंगे या कुछ खाएंगे तो वो एज ए डेड फॉर्म में हम खाएंगे, लाइव फॉर्म में तो खाएंगे नहीं। तो यह रिसर्चेस भी हुई और अब तो विदेशों में भी रिसर्च हो, ये माना जाता है वहां के लोग भी प्लांट बेस्ड डाइट की ओर बढ़ रहे हैं। वो ज्यादातर जिसको हम वीगनिज्म कहते हैं वो यही है। वो इवन दूध भी नहीं लेते हैं, क्योंकि दूध भी गाय का एक प्रोडक्ट है। वो कहते हैं कि दूध भी जो है वो, उस पर गाय के बच्चे का ज्यादा अधिकार है। केवल छोटे बच्चे को दूध की जरूरत है, हम लोगों को नहीं है।
हम लोगों को प्लांट बेस्ड जितना भोजन है वो लेना चाहिए, और ये हमारे पुराने ऋषि मुनियों का कहना था। दूसरा, जब लिक्विड डाइट की बात आती है तो पानी सबसे पहले आता है। तो जो हमारा पानी है, जो जल है, वो ज्यादातर शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए पहले जो प्रकृति में सब चीज शुद्ध थी, अब हम लोगों ने ही उसको अशुद्ध कर दिया है, पॉलिथीन्स का यूज करते हुए। तरह तरह के हम आ, जो अपनी फसलें होती हैं उनमें जो हम डालते हैं वो सारे केमिकल्स हैं बेसिकली। तो वो उससे हमारे प्लांट्स जो है वो उतने ज्यादा शुद्ध नहीं रह गए अभी। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो खाद भी जो हो वो ज्यादातर गाय के गोबर की हो तो ज्यादा अच्छा है। तो वो कहते हैं कि उस रूप में दूध जो है उसको हम दोनों चीजें मानते हैं, लिक्विड भी मानते हैं और भोजन भी मानते हैं, क्योंकि उसमें सारे पौष्टिक तत्व भी हैं। दूसरा, लिक्विड पेय में शराब भी आती है, लेकिन शराब में चूंकि अंगूर को सड़ा के बनाया जाता है तो वो जो शराब है वो भी फायदेमंद नहीं है शरीर के लिए, और स्पेशली ब्रेन के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ जिसको हम मदिरा कहते हैं वो वर्जित है, वो अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी तरह से। इसी कारण समाज में भी वो टैबूज के रूप में, भले ही उसको कितनी भी एनर्जी मिले लोगों को, और विशेष रूप से गर्म जलवायु का जो हमारा भारत देश है उसमें तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है फ्रेंड्स। दूसरे, नेक्स्ट हमारी आती है जो हवा है। ये भी हम खा रहे हैं, एक तरह से हवा भी हम पी रहे हैं। तो हवा में भी जितना ऑक्सीजन का जितना ज्यादा मात्रा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना हम प्रकृति के साथ जुड़े, पेड़ पौधों के सानिध्य में रहे, उतना अच्छा है। उनसे हमें ऊर्जा भी मिलती है, और वो अब तो आजकल प्लांट बेस्ड हमारी डिजीज को दूर करने के लिए प्लांट से सहायता ले रहे हैं। अभी मैंने एक सेशन अटेंड किया था जिसमें आ रहा है फ्लावर थेरेपी, जिसमें हम मानते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं वो बताते हैं। जैसे हिबिस्कस है तो वो बेसिकली हमारी जो मूलाधार की शक्ति है उसको बढ़ाता है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियां हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की जो फ्लावर्स हैं वो दूर कर रहे हैं, और इसमें बड़ी रिसर्च चल रही है। एक शाह हैं जो बॉम्बे में रहती हैं, वो तो इसकी एक्टिव वो है। तो मैंने उसके सेशंस अटेंड किए थे। तो हम लोग भी आजकल प्लांट्स में इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जब भी हम सेशंस में जाते हैं कि किस तरीके से हम फूलों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फूल केवल तोड़ने के लिए और चढ़ाने के लिए नहीं है फ्रेंड्स, उनको आप टच करिए। मैं कभी भी फूल को इसीलिए तोड़ती नहीं हूँ, उनको बस टच कर दिया वही चढ़ाने का हो गया आपका। वो एक सौंदर्य है अपने उसमें, वो हमें जीते जी सौंदर्य दे रहा है, और एक दिन के बाद उसको गिर ही जाना है, तो हमें उसको क्यों तोड़ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सेंसिटिविटी, हम कितना संवेदनशील रहे हैं प्रकृति के प्रति, ये हमें सिखाया। तो ये संवेदनशीलता फ्रेंड्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसीलिए मैं मानती हूँ वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, आप जान सकते हैं कि उन्होंने अपने अंदर प्रयोग किए, पहले एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसके बाद जो बताया, जो जनरलाइजेशन दिया, फिर जो है वो हम लोगों को बताया। पहले एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उस वक्त की बात जो थी, धीरे धीरे हमारे यहाँ और हमारे यहाँ इसको यूज होता था वैदिक युग में, लेकिन बीच में जो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं अंधकार युग आया, उसमें हम अपनी चीजों से दूर हो गए फ्रेंड्स। अब धीरे धीरे हमें दोबारा जुड़ाव की जरूरत है उसके लिए। तो हम हिंदू मानते भी हैं फ्रेंड्स, ये मानते हैं कि जो भी कुछ हमें बाहर दिखाई दे रहा है वो बेसिकली भीतर का ही बाहर का एक्सटेंशन है। जो भी बाहर हम देख रहे हैं वो भीतर का ही प्रकाश है। तो इस चीज को उन्होंने पहले समझ लिया था, और इसीलिए ये मानते हैं कि अपने मन की शुद्धि यानी मनोमय कोश की शुद्धि भी बहुत जरूरी है, एस्ट्रल बॉडी पर भी शुद्धि जरूरी है। इसीलिए जो उन्होंने विशिष्ट मंत्र दिए, जो साउंड्स दी, जो बीज मंत्र भी दिए, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट थे कि उनका अपना एक अलग महत्व है। और इसीलिए मंत्रों का जाप जो बताया वो उन्होंने प्रमुख बताया कि उनको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यही कारण है कि हम अब देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि, स्पेशली जब हठयोग पढ़ेंगे आप, हठयोग प्रदीप का, तो उन्होंने पूरी शारीरिक शुद्धि में इतने नियम बताए हैं कि जो आजकल हम लोग फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन उससे पूरा हमारा शारीरिक कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बौद्धिक, ये सारे कोश जो है वो शुद्ध हो जाते थे पूरी तरीके से। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति विशेषता थी। अब हमारे जो है इसमें अब आया कि हमारे जो 5 दैनिक यज्ञ हैं वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, जो हर दिन किए जाने चाहिए, यानी हर दिन, एवरी डे जो हमें करने चाहिए। वो है हमारा पहला, ऋषि या वेदों के लिए यज्ञ, है ना। हर चीज यज्ञ है, एक्चुअली जीवन भी एक यज्ञ है, इसको आप ऐसे माने। देवता लोग, देवताओं के लिए यज्ञ, फिर पितरों के लिए यज्ञ, मनुष्यों के लिए यज्ञ,
और भूतों के लिए, ये क्लासिफिकेशन किया सरलता के लिए। तो सबसे पहले उसमें बात आती है स्वाध्याय की। स्वाध्याय का मतलब है एक तो स्वयं का अध्ययन, जो भी हम पढ़ते हैं उस पे मनन चिंतन फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। तो वो स्वयं का अध्ययन कहलाता है बेसिकली। और मैं जिस उससे जुड़ी हूँ PSSM से, वहां 3 चीज हमें बताई हैं, ध्यान, स्वाध्याय और संगत, सज्जन सांगत। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है यदि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। तो ध्यान आपको अंदर ले जाता है, स्वाध्याय आपके एक्सटेंशन के लिए, आपकी बुद्धिक मनोमय स्तर के लिए बहुत जरूरी है, और सज्जन सांगत आपको ओवरऑल ग्रो करने में मदद करता है फ्रेंड्स। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बताया हमारे यहाँ यही इसी का विधान था, पहले कोई ना कोई पवित्र पुस्तक पढ़नी चाहिए, और धीरे धीरे वो है उसमें मनन चिंतन ये जरूर करना चाहिए। वे अपनी ओर से बार बार फिर जोर दे के कहूंगी, केवल पढ़ लेना काफी नहीं है, उस पर मनन चिंतन फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, तभी हम उसको समझा। दूसरा, हम साझा करें सज्जन सांगत्य। अब ये भी जो क्या है, ये हम साझा ही तो कर रहे हैं। तो ये सज्जन सांगत्य, तरह तरह के हम अपने विचार प्रकट करें, वहां के विचार, इससे हमें ग्रो करने में फ्रेंड्स बहुत हेल्प मिलती है। इसीलिए हमारे यहाँ माना गया था जो उस वक्त हमारे हैं, अब तो हमारे यहाँ बहुत बुक्स हो गई हैं, वेस्टर्न बुक्स भी बहुत अच्छी हैं जो हमें ग्रो करने में मदद करती हैं हमारी भारतीय पुस्तकों के अलावा, वो तो है ही। दूसरा, देवताओं के लिए जो हमारा होम जो यज्ञ माना गया, जिसमें हमें माना कि जो भी हमारा है 1/10 हमें देना चाहिए समाज के लिए। समाज से हमने जो कुछ लिया है उसको हमें समाज को वापस भी करना है फ्रेंड्स। तो किस फॉर्म में कर सकते हैं आप? ज्ञान दान के द्वारा भी कर सकते हैं, दे आर डिफरेंट मेथड्स। किसी भी तरीके से आप वो देवताओं के लिए कर सकते हैं वो यज्ञ, जिसका मतलब है कि जो हमने प्रकृति से लिया है वो हम प्रकृति को वापस भी लौटाएं, ऐसा, जिससे कि फिर हमें प्रकृति से दोबारा मिले। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। दूसरा, पितरों के लिए जो है, हमारे जो पितर हैं, जैसा अभी श्राद्ध के बारे में संध्या जी ने भी बहुत बड़ी बात कही, इतने सारे हमारे श्राद्ध हैं। तो बेसिकली मैं यही मानूंगी, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है श्राद्ध बेसिकली। तो जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, हमारा श्राद्ध जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। श्रद्धा, मरने के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं श्रद्धा से, आदर के साथ। यही हमारा उस कर्म कांड का यही जिसके पीछे का जो महत्व था वो श्रद्धा ही थी, उसी से श्राद्ध बनाए। दूसरे, मनुष्यों के लिए जो हम यज्ञ करते हैं, जैसे आतिथ्य, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव तो माना ही जाता है कि जो भी आए उसको आप भोजन खिलाएं, ये परंपरा थी। मैंने अपने बचपन में भी देखा है कि जो भी घर आता था खाना उसके लिए रहता ही था तैयार। ऐसा नहीं था कि हम उसको खाली चाय या वो मिला के वापस कर दें। ये हमारी कर्तव्य होता था कि वो आएंगे तो खाने का टाइम हो रहा है तो खाना खा के जाना ही। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ये हमारे घर में हम उसी को देखते हुए पले बढ़े हुए हैं। तो ये ही अतिथि यज्ञ है कि कोई भी आए उसको आपको खाना खिला के भेजना है, उसको पूरा संतुष्ट करके भेजना है, ये बहुत जरूरी है। और ये एक हमारे भारतीय संस्कृति विशेषता थी। तो भूखों को खिलाना, ये सारी चीजें हमारे अतिथि यज्ञ में आ जाती हैं। दूसरा, भूतों के लिए बाहरी यज्ञ, यानी अन्य प्राणियों के लिए हम कैसे निकालें? तो उसके लिए जैसे हम जमीन पर, पृथ्वी पर थोड़ा भोजन रखते थे, क्योंकि पृथ्वी पर हमारे बहुत सारे जीव हैं जो पृथ्वी पर ही हैं, हम उनके लिए अन्न रखते हैं। और ये हमारे भारतीय संस्कृति में अब आज भी देखते हैं, लोग चींटियों को खिलाते हैं। हमारे यहाँ भी, मैं जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ खाने से पहले हम लोग 5 कौर निकालते हैं और वो हम चिड़ियों या पक्षियों के लिए रख देते हैं, गाय के लिए हम अलग निकालते हैं। तो ये सारी चीजें यही है, हमारे थ्रू उनको जा रहा है। लेकिन करते समय ये मेरा नहीं है, आप ये उसको भी हम डाल देते हैं, हम डस्टबिन में नहीं डालते हैं कि किसी प्राणी के, किसी भी जीव के वो लगे, वो बहुत जरूरी है। थोड़ा नेट जा रहा है आपका। हम क्या भावनाएं, दया जी थोड़ा नेट जा रहा है आपका। और रखनी है। तो इस संस्कृतों की खुशी जो है, इसी पे हमें अपनी खुशी है जो
I think we have lost her because her net was going on. She will join back. तो फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत जरूरी हैं जैसा मैंने बताया। और शिक्षण जो है, यही जो है ब्रह्मा का यज्ञ है, यानी टीचिंग। जो पढ़ाए उसको समाज को लौटाना। तो होम अग्नि में अर्पण, हमारे यहाँ अग्नि को अर्पण किया जाता है। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। बीच में आपका कनेक्शन चला गया था, तो क्या आप एंड करने वाले हैं अभी? हमारे यहाँ जो अर्पण, आपका कनेक्शन चला गया था बीच में। मैं ऑडिबल? हेलो। You are नो, यू आर नॉट ऑडिबल। एक मिनट। हाँ, ये फोन ऐसे आप कर लीजिए। या गो अहेड। ओके, तो हमारे यहाँ ये चीज बहुत जरूरी है। अग्नि से शुरू करते हैं हम। तो अग्नि भी देवता, इसीलिए हम कहते हैं अग्नि देवता, उसको भी देवता मानते हैं। उसको मानना, होम यानी यज्ञ करना, जिससे पूरी प्रकृति में शुद्धता रहे, प्योरिटी रहे। बलि भोजन, सबको भोजन कराना भूत यज्ञ माना जाता है। अतिथियों का सत्कार करना, अतिथि देवो भव के हिसाब से जो भी कोई घर में आए उसको आप संतुष्ट करके भेजें, भोजन करा के भेजें। और ऋषि वेद यज्ञ, जो हम देते हैं, जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने सीखा, उसको मैं समाज को किस तरीके से लौटाऊं, उसको वापस करके, ये हमारे ऋण हैं एक्चुअली। तो उनको मैं किस तरीके से पूर्ण होऊं, उनको ऋणों को पूरा करके, ये प्लस पितरों का श्राद्ध, जो हमारे गुजर गए उनको भी हम उन 15 दिनों में याद करते हैं श्राद्ध के थ्रू, विद श्रद्धा, विद फेथ। उसमें फेथ जरूरी है, उसको आप मजबूरी में करके करेंगे फिर वो श्राद्ध नहीं रहेगा। ये ध्यान रखें, श्रद्धा के साथ हम जो काम करेंगे वो श्राद्ध कहलाता है। और मनुष्य भोजन के साथ और भूत बलि। तो हमारे यहाँ बहुत ही रिच हमारी संस्कृति रही है, जिसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए यज्ञों के साथ ही इस प्रकार से मानव जीवन कंप्लीट होता है। पूरा हम कंप्लीशन कह सकते हैं कि जो कुछ मैंने दिया वो मैंने वापस किया, उसके बाद फिर मैं गई। और मेरे बाद भी मैं इस आशा के साथ गई कि जो मेरे वंशज हैं वो मुझे याद रखेंगे, यानी मैं उनके रूप में जिंदा रहूंगा, उनकी स्मृति के रूप में। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच। any questions? Please feel free pertaining to the subject only. Anybody can raise a question. Am I audible? Yes. Yeah. Okay, मैं कह रहा हूँ कि संध्या जी, it was really wonderful. Rajeshwari ji and Abha ji, you also did justice with the entire translation. Now, before we go to the discussion point or any questions, since Pablo is here, I would request him that whatever he wish to say finally, he can say so about his books and also about this meeting which he has attended. Thank you. Thank you. Yes, thank you very much for your presentations. It was very interesting. I know that BESANT wrote that book to promote Hindu education. And she also added a lot of theosophical meaning to what the normal Hindu discipline and practices are. So I bought that book when I was in Adyar, when I was living in Adyar, and then it's a great book, and you have given a very nice overview. So thank you everybody for your work. And yes, about the books, I don't know what else. I mean, they are available through Adyar. And if any of you have any particular question, you can write an email to Taral or to ourselves,
and then we will be in touch. Thank you, Pablo. And yes, Shindeji, you or anyone else would like to add something? We have a few minutes, so you can all go ahead. Or any question is there, you can ask. Sandhya ji, Thank you, Taral ji, very much. Thank you, Sandhya Rani ji, Rajeshwari ji, and Abha ji for your all translations and deliberations. I must very happy to see Pebelo arriving in Mumbai and attending this one. Pebelo, we are waiting at you at Adyar. Hope you will arrive on 15th or 16th. 14th. 14th, okay, very nice. Well, this is the Triveni program. Usually it is held on Tuesday. And it is very nice to attend because very new people and very enthusiastic people, they contribute their understanding about the various teachings of religion and books of the theosophy. Especially they select very nice books. And especially whatever book is selected this time is, as we know, it is the religion and ethics textbook written by an agent for the Hindu people. Because we know Hindu people have so many gods. And God is all pervading in all of you. That is what it is. When it is said religion and ethics, religion means responsibility, ethics is good conduct. So it is our responsibility to have a balanced life with good conduct. And therefore, it is our Sanatana Dharma. It is Sanatana Dharma means eternal responsibility as a human being. So God is not different from you. That is what the Sanatana Dharma ethics teaches us. And meditation is tuning with the God. So it is clearly an agent used to say, perception leads to observation, observation leads to investigation, and investigation leads to contemplation, and finally contemplation leads to again meditation. There is no end to meditation. Okay. That is what Sanatana Dharma teaches. And you know, today is incidentally, Taralji, Yes. marriage is one of the sanskaras in a Hindu culture. Yeah. And because it teaches man is incomplete without woman, and woman is incomplete without man. So man and woman make one whole. This is what it is taught in many sanskaras. We also today used to perform Tulsi marriage. Tulsi marriage starts from today up to the moon day. And marriage is to live and let live. That is the theme it is given to in this culture. So marriage is sacrifice to yield and give. So marriage is adjustment between wife and husband. Marriage is actually egolessness to become leading the married life. This is one of the sanskaras. I am just contributing this because today Yes. is Tulsi marriage. So we marry the plants, marry the animals, marry the human beings. This marriage is incomplete with the other because two poles we accept, positive and negative. When they come together, there is this spark. Spark is the light again. Yes. So these are the many things which are taught in this text, and it is explained very nicely by Dr. Annie Besant. And I am happy to listen in various languages. Sandhya Rani dealt with every step by step.
and all sanskaras translated by Abhavji, which I could understand very well. And Gujarati, I don't understand much, but I was enjoying Rajeshwari's translation. No, Thank but you it very was much. really good. And thank you, Pablo. We are waiting for you. Thank you. Okay. Thank Okay, now I'm just putting out something and then we can wind up. I'm just giving you the first look of our studio, which is here. You want us to take the background off? Yeah. Okay, so can you see these lights? All lights. I'll put myself off so you can see. It's on Theojyoti thing Yeah, I know that. I'm just for others. you all so you can see in full frame, and Pablo is also here, so you will be able to see how this studio will function, and I'm very excited to share this with you. Now we have full frame, and this is the lights, and this is the green screen. You can see Pablo here, and I was sitting right next to him. Okay, but the advantage of this green screen is what? That the background we can change. Okay, so my background was something different, which you can see above, and Pablo's background was something else. And you see this huge screen over here. So when you will see the final news coming, it will be like the news channel which you see, that the wall behind will have a full version of me standing here, and the wall will have all the different shots, and that is sent by all other participants, or whoever sends me the video will be shared there. Okay, so with this small sharing, and Pablo is the first person internationally or nationally to be in this studio. And Shikharji on 23rd will be here and will be broadcasting the first news from here. So really, I wish all best wishes from you all and blessings from the elders. Thank you so much. Thank you. Now we'll go ahead with the finishing of this. So where is yeah, he's here. Keshwarji, please unmute yourself and start your video, please. Keshwarji. Keshwarji, yeah, she is here. કઈ રીતે કરાય? Yes, Atulji, please go ahead. કેશવરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः
चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम